हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है नवंबर 9 2022, दिन है वेडनेसडे और आज हम करने जा रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज एनालिसिस। इस वीडियो के थ्रू कंप्लीटली द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज एनालिसिस होगी। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ हो, हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आप तक ऐसी आसानी से पहुंचा सके। फर्स्ट पेज पे इंडिया विजन वन वर्ल्ड लोटस इन G20 लोगो सिंबल ऑफ होप पीएम। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील किया लोगो अर्थ जस्ट पोस्टेड विथ लोटस थीम वसुंधैव कुटुंबे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वेबसाइट ऑफ द इंडिया G20 की जो प्रेसिडेंसी होने वाली है तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है। दिसंबर 1 से इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिल जाएगी। कमिंग टाइम ऑफ क्राइसिस और चाओ इन द world is going through the after effect of destructive once in a century pandemic, conflict, and lot of economic uncertainty. The symbol of lotus of G20 symbol is representation of hope in this time. No matter how adverse circumstances, the lotus is bloom. Even if the world in a deep crisis, we can still progress, make the world better place. तो उसके ऊपर ही पूरा आर्टिकल देंगे। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा वेबसाइट थीम और लोगो अनवील की गई है G20 प्रेसिडेंसी के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। टेक क्रिटिसिज्म ऑफ कॉलेजियम इन पॉजिटिव लाइट, मस्ट इम्प्रूव, जस्टिस चंद्रचूड। जस्टिस नीड नॉट वरी, लर्न टू री-अडॉप्ट, री-इमर्जिंग इन एरा ऑफ सोशल मीडिया। Day after Union Law Minister Kiran Rijiju targeted the Supreme Court collegium system for appointing judge as a epic and not accountable, involving a lot of politics. Justice D.Y. Chandrachud ने who take किया है over the 50th Chief Justice of India Wednesday में उन्होंने कहा है कि criticism of collegium system must be look into a positive light, attempt made to improve it. While we work within the fold of that system, yet at the same time there are several improvements which we can bring about because no institution in any constitutional democracy can lay claim to being perfect. So I think constantly evolving process, I told the Indian Express। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। नेक्स्ट आर्टिकल्स पे ग्लोबल साउथ इन एक्यूट पेन, रिटर्न टू टेबल, जयशंकर टू रसिया। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर वो रसिया की विजिट पे है तो उन्होंने कहा कि विल कंटिन्यू टू बाय रसिया ऑयल टू मीट इंडिया एनर्जी नीड, सेइंग दैट यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वाज अ डोमिनेंट फीचर इन हिज डिस्कशन विद रसिया फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव इन मॉस्को। Tuesday, External Affairs Minister S. Jaishankar said the global economy is too interdependent not to be impacted by a single conflict. Global South is feeling the pain very acutely, especially after 2 years of pandemic. Global South referred to the developing and less developed country in Latin America, South Africa and Oceania. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है। Speaking after bilateral talks, Jaishankar said India strongly advocate a return to dialogue and diplomacy, and it is one of the side peace, respect our international law, support for the UN Charter. He even offered the help issue of including food grain and fertilizer shipment, support for any initiative that directs the global economy, or buying the cheap Russian oil. He made it clear that India will continue purchase cater to need its consumer. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। 8 ex Indian Navy men in Qatar custody, दिल्ली said officially to Doha, no breakthrough so far। 8 जो इंडियन नेवी के पर्सन थे उनको कतर में कस्टडी कर गया है एक्स इंडियन नेवी के। तो दिल्ली ने सेंड किया ऑफिशियल जो दोहा को कतर की राजधानी है। अभी तक कोई भी ब्रेक थ्रो माने कोई भी बातचीत नहीं हुई है तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया। दिल्ली डिस्पैच ए सीनियर ऑफिसर टू दोहा टू लैंड वेज टू ईच एम्बेसी effort to rescue release of 8 former Indian Navy personnel who have been Qatar custody in August end। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। फ्रीबीज और वेलफेयर, बीजेपी फेस फास्ट टेस्ट इन हिमाचल गुजरात इलेक्शन। बीजेपी प्रॉमिस साइकिल एलपीजी सिलेंडर, कॉल इट इम्परमेंट नॉट एलुरमेंट, हैविंग ए
principal position against the freebie following the Prime Minister Narendra Modi call it against rabdi culture. BJP is doing a complicated balance in act in Gujarat Himachal Pradesh assembly election in which he reviled the generous with promise. अब नेक्स्ट आर्टिकल्स में यूजीसी नॉट मैंडेटरी टू पब्लिश इन जनरल बिफोर फाइनल पीएचडी थीसिस। जो न्यू रेगुलेशन हुई है डॉक्टरल प्रोग्राम में नोटिफाइड मंडे किया गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा स्केप्ड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग रिसर्च पेपर पब्लिश इन पीयर रिव्यू जनरल बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी थीसिस में, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया। सो फार इट मैंडेटरी था अभी तक एमफिल में मास्टर ऑफ फिलोसफी scholar to present at least one research paper in conference and seminar, while the PhD scholar have published to at least one research paper in refers to journal to make two paper presentation in conference or seminar before the admission of this thesis to adjudication। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया। When contract Professor M. Jagdish Kumar, chairperson UGC, said that scrapping the mandatory publication requirement, higher education regulator recognized that the all size for all approach is not desirable, elaborating the need of soon a common approach towards addressing all discipline. He point out that many doctoral के ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। एड ऑफ द पोल ऑफ टू होल्ड 5 public meet Delhi with MCD poll weekly away. Aam Aadmi Party set conduct 500 public meeting Delhi across the city. Division was taken high level strategy meet held by under the leadership of senior party leader Manish Sisodia of state convener Gopal Rai. It is also attend to all party MLAs। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। For 250 MCD post, BJP has 50K probable names. The BJP Delhi unit have been faulted around the 15,000 recommendation biotech in the run of the MCD poll with at least 3 serious aspirants vying the seat, party leader said on Monday। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए। नेक्स्ट आर्टिकल्स पे जहांगीरपुरी आनंद विहार सी वर्ल्ड वर्स्ट AQI over the 2-week period. In the 2-week of from October 24 to November 7, when Delhi air quality deteriorated fast, very for then severe category air quality monitoring station Jahangirpuri Anand Vihar record the worst AQI data from the Central Pollution Board CPCB। सो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। जहांगीरपुरी आनंद विहार में वर्स्ट AQI है 2 हफ्ते के अंदर। ये दिल्ली की न्यूज है। दिल्ली मेट्रो रेड लाइन गेट 8 कोच ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम। दिल्ली की जो मेट्रो है वो रन करेगा 2 ट्रेन विथ 8 कोचेस ईच ऑन द रेड लाइन इंस्टेड ऑफ द रेगुलर 6 कोचेस इन फॉर increasing the carrying the capacity. These 2 train will be the begin running from the Tuesday onward according to communication from the Delhi मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन नो इंटरेस्टेड नोएडा ग्रेटर नोएडा नोएडा बिल्डर से इट इज विल इंकरेज बर्डन इन वेक ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दैट विल बी इफेक्टली राइज द इंटरेस्ट रेट फॉर दोस हु इज आउटस्टैंडिंग ड्यू इन नोएडा ग्रेटर नोएडा बिल्डर से में इफेक्ट द ऑलरेडी प्रेशर रियल एस्टेट सेक्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे हम उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हाईएस्ट यील्ड इन 12 ईयर राइजिंग कॉस्ट एंड फॉलिंग प्रॉफिट एप्पल फार्मर स्मॉल ए रोट इशू सेट इफेक्ट टू पोलिंग इन 20 सीट बोथ पार्टी रियल आउट प्रॉमिस फॉर एमएसपी एपीएमसी मार्केट टू जीएसटी। जो ट्रक विद दिल्ली उत्तर प्रदेश हरियाणा आंध्र प्रदेश नंबर प्लेट laden and with apple with 7 seen making their way on the road to from the Kinnor the season over the rest of the state, but the Kinnor apples which were plucked later due to the higher evaluation have the 10 odd day still going continue to find their way to market।
उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। और चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। डे आफ्टर ईडब्ल्यूएस verdict, Natish Shah remove 50% कोटा कैप। बिहार के जो सीएम थे रिवाइव किए डिमांड फॉर ऑल इंडिया कास्ट सेंसस। जो डे आफ्टर सुप्रीम कोर्ट के अफल किया गया 10% कोटा फॉर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो ईडब्ल्यूएस है, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने ट्यूसडे में डिमांड किया कि 50% कोटा कैप शुड बी इंक्रीज एंड रिट्रायर हिज डिमांड टू नेशनल वाइड कास्ट सेंसस। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया। Growth change have the spark aspiration, they pressure government to deliver मनमोहन। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और सोशल चेंज है और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, have brought to their wake up aspiration of an entire newly generation of India, which have been in turn existing pressure on government to deliver। फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे उन्होंने ट्यूसडे पे कहा है। इलेक्शन कमीशन अनाउंस काथुआली असेंबली बायपोल ऑन December 5। जो इलेक्शन कमीशन ने ट्यूसडे में अनाउंस किया कि बायपोल फ्रॉम द काथुआली असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन इन उत्तर प्रदेश विल बी हेल्ड December 5। तो उसके ऊपर ये छोटा सा आर्टिकल दिया गया। टेली कंपनीज इन कोर्स हेयर्स ऑफ द DRI एंड कस्टम ओवर द राउट imports notice to over a dozen of files। The director of revenue intelligence है और custom are the loghead with the telecom companies, this time over the alleged misqualification important of the routes and midterm of the evade custom duty। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। इंडिया फास्ट प्राइवेट लंच व्हीकल्स ऑल सेट टू मीडियम फ्लाइट। इंडिया फास्ट प्राइवेट डेवलप जो लंच व्हीकल है हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट विक्रम एस विल सेट टू मेक ए median flight from the country only the spector in Sarihota between the November 12 to 16। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया। Making the beginning of private sector launches, the missile named Paramba will be see Vikram S carry 3 customer satellite in suborbital flight। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जो एडिटोरियल की है। CGI चंद्रचूड़ जो न्यू चीफ जस्टिस टेन्यूर बी चैलेंज इन द दिस फैक्शन टाइम बट इट आल्सो द फॉर्मिडेबल अपॉर्चुनिटी फॉर द स्कॉलर जज। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उमेश ललित रिटायर हो चुके हैं ट्यूसडे में और जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने टेक ओवर किया है 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टुडे। On Chief Justice Lalit took over the August 27 an interview to his newspaper. He framed this 74 days giving him to time due to things that need to be done. Good practice that he would institute for his successor to build on. He was done exactly that. This included addressing the delay in listing case and setting up the at least one constitution bench of 5 order case are held on priority. Chief Justice of India Lalit set the bar high. He is so larger, but the Justice Chandrachud is ideally placed to stop into them and raise the bar। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल देखे कि न्यू जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं 50 DY चंद्रचूड़, तो उनके आने वाले दिनों पे जो फॉर्मिडेबल अपॉर्चुनिटी है उनके स्कॉलर जज के लिए और उसके फ्रैक्शन भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस होंगे इस टाइम में। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। ए वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ जो इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी करेगा प्रेजेंट द वेनरेबल नेशन एंड वन द साउथ एशियन एज इट इंटरजेशन। नवंबर 8 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया लोगो वेबसाइट और थीम इंडिया की प्रेसिडेंसी ऑफ G20 के सेटिंग द टोन फॉर द कंट्री G20 प्रेसिडेंसी बिगिनिंग December 1। मोदी कॉल फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर अंडरस्कोर द फेस वसुंधरा कुटुंबकम। Apart from the national flag color, the logo displayed a lotus with 7 pallets on which symbolically rests the earth, its ocean, and the 7 continents,
सिग्नेटिव प्रो प्लान एंड अप्रोच। मोदी ने प्रूव किया है home to point that Indian presidency will transcend to limitation, geography and category to encompass world, leaving none behind. India will work deliver global good as a voice for the global south. The lotus symbol of purity and resilience suggests that the hope global community will overcome the deliberating economic effort for the COVID-19 पेंडेमिक। तो उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल देखिए कि इंडिया की जो स्टेटस ऑफ द G20 की डिफाइन करेगा कंट्री और चेंजेस को। डेवलपमेंट एजेंडा मस्ट बी रिसीव द फास्ट बिल्डिंग डिफरेंस ओवर द एनर्जी diversification and emerging challenges in trade and technology will lead to reconciliation. Stagflation in USA, China, Europe threaten to affect global economy outlook. Policy coherence in the microeconomics and trade in imperative। तो उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। बैकरिंग गवर्नर जो बोथ आरिफ मोहम्मद खान और सीपीएम नीड टू बी स्टेप बैक दिस दिल्ली बैटल डॉज नाइदर एनी गुड। जो केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और वहां के जो सीपीएम के पार्टी के मेंबर है उनके बीच में एक होस्ट चला है इशू के। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल देंगे कि जो दिल्ली बैटल चल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर खिंचातानी, इससे किसी की भी भलाई नहीं होगी। तो उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो ऑफिस है गवर्नर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों को एक्ट करना चाहिए स्टेट के वेलफेयर के लिए, ना कि एक दूसरे को खिंचातानी करने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। द न्यू टीचर टू इक्विप विथ फॉर फ्यूचर इट इज नॉट इनफ फॉर एजुकेटेड टू बी नॉलेज प्रोवाइडर। जो ग्लोरियस फ्यूचर है बैकबोन आवर कंट्री home to one of the world's civilization and carrying the immense wisdom, fortitude and resilience owing to centuries of hardship. India today stands at the critical junction. We can no longer rest the laurel of the illustrated era, be complaint about the many noteworthy inventions and discovery diffused on the world by our rejuvenated forefathers. To be global vanguard, our youth need to be unshackle themselves from the casteism, inequality, hatred and discrimination that remaining completely social fabric। जो हमारे आने वाले दिनों पे इंडिया 2047 तक 100 एनिवर्सरी बनाएगी अपनी इंडिपेंडेंट के लिए। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल देंगे कि इससे जो आने वाले पीढ़ी है नेक्स्ट जनरेशन है वो कास्टिज्म और इनइक्वालिटी और हैट्रेड और डिस्क्रिमिनेशन जैसे जो सोशल फैब्रिक थी उससे दूर रहेंगे कंटेम्प्रेरी। तो उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल देंगे। जो इक्विपमेंट है फ्यूचर के यूथ के लिए वो इनफ होगा एजुकेटर को नॉलेज प्रोवाइड करके। तो उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। हियर लाइज दोबे द ग्रेव ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर हाईलाइट द रियल डेंजर द फैंडम कैन समथिंग पोज। हैरी पॉटर के जो फैंस है who have been gathering in the side of freshwater west which Kenny Wells recognize the web of belong to chartered Dobby and can continue to do. Local authority have said as UTS which including shocks in times with greater emotional resilience with the fictional world have started to pose threat to ecological sensitive area which is home of rare ground string bird, seals and harbor prosperity and seal gull. After the polling the resident with the mixed result, authority have ruled the motive site and asked fans to play their respect in simply taking a picture। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जो आइडियाज पेज है। इट इज नॉट अबाउट अ प्रॉपर्टी। ईडब्ल्यूएस के जो लॉ है सेक्शन बाय द सुप्रीम कोर्ट एम फॉर द struggle of to avoid standing offering the reservation is now for the Hindu upper class। जो मेजोरिटी वर्डिक्ट ऑफ फोल्डिंग की गई है 1/3 अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के डिलीवर द नवंबर 7 सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइनली परफॉर्म किया है एस्थेटिक और लास्ट राइट फॉर रिजर्वेशन ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर द रेडिक्स ऑफ कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन the discrimination idea for reservation have alleged died in the January 9, 2019 when the bill to provide reservation for economic weaker section become the full-fledged act parliament to in just 3 days. The idea have been that went for the well over the decided demand for reservation
for the relatively prosperous and powerful caste like a Jat, Patihar, Mathara, Kopara get a momentum across the country. In any case, dominant common sense sapped by the upper caste always rejected the idea, performing to think revision in kind of governor charity, deriving with the electoral compulsion. The Supreme Court has ensured that upper caste can now drink from only well that was ever forbidden to them. तो उसके ऊपर ही पूरा आर्टिकल दिया गया। ईडब्ल्यूएस के कोटा जो सैक्शन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्ट्रगल को अवॉइड करने के लिए एक ओपन रिजर्वेशन करेगा जो हिंदू के अपर कास्ट है, जो अन 103rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है, जो इस पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% की रिजर्वेशन दी जाती है, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया। लेटर टू द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो 5 इंपोर्टेंट टास्क है कॉन्फर्म किए गए थे डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा। ही अज्यूम ऑफिस नवंबर 9 में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एडमिनिस्ट्रेट किया ऑफर्स टू द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ assume the office CJI at the critical time when there is a lot of the expectation from judiciary. His outstanding academic qualifications, having studied among the best university in India and abroad, University of Delhi, Harvard Law School, has been at forefront to effort to protect the rule of law and promote the access to justice, having the authority several important judgments and help to the advanced progressive of jurisdiction. Justice Chandrachud will be also youngest person in the at least 10 years to appointment Justice of India, besides having the longest tenure over the 2 years in recent times. तो उसके ऊपर पूरा आर्टिकल देंगे। जो 5 इंपोर्टेंट फॉरंट है डीवाई चंद्रचूड़ के लिए उनके जो ऑफिस तो अज्यूम करने के बाद में, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल देंगे क्योंकि आने वाले दिनों में वो 2 साल के लिए लॉन्गेस्ट टेन्योर होगा और यंगेस्ट पर्सन हो चुके हैं 10 साल के अंदर जो अपॉइंटमेंट हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। एक्सटेंडिंग सोशल जस्टिस, ईडब्ल्यूएस कोटा इज ए वे टू इम्प्रूव इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज। जो ईडब्ल्यूएस कोटा के ऊपर दोबारा से एक आर्टिकल दिया गया कि इससे जो एम्पावरमेंट होगा इकोनॉमिकली जो मार्जिनलाइज्ड हो चुके हैं एक्सटेंडिंग करेगा सोशल जस्टिस को, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल देंगे, आप इसे सेल्फ नॉलेज से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे जो एक्सप्लेन किए। रिस्ट्रिक्टेड हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट एंड द लार्जेस्ट जीएम क्वेश्चन, जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है रिस्ट्रिक्ट करें यूज ऑफ द ग्लाइफोसेट एंड वाइडली यूज्ड herbicides. This come even the Supreme Court on November 10 is about to take up the bill seeking to ban on the herbicide tolerance crop including transition herbicide mustard and cotton. तो उसके ऊपर ये आर्टिकल देखिए कि लार्जर जीएम के ऊपर जो क्वेश्चन है उसको कैसे रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया, जो होम मिनिस्ट्री के रिपोर्ट की गई से फील्ड टू वीडियोग्राफी ऑफ 576 मदर टंग कंप्लीट किए गए, वेब आर्काइव ऑन वे, तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कंप्लीट किया मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया विद फील्ड वीडियोग्राफी ऑफ कंट्री 576 लैंग्वेज in order to preserve and analyze the original flavor of each indigenously mother tongue. It has been planted to set up the web archive National Informatics Center, saying Home Ministry annual report जो 2022-2021 में, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। रेड फ्लैग ओवर द ग्रीन वॉशिंग, जो COP27 की यूएन सेक्रेटरी जनरल ने वार्न किया कि जीरो टॉलरेंस होना चाहिए अटेम्प्ट टू एक्सट्रागेटेड क्लाइमेट एक्शन और to forcibly level action to being climate friendly. What is unfair practice of greenwashing? जो यूज है unfair practice जो climate action is now new corruption and sometimes even the countries tax to exhibited action they have taken to climate changes. Also the impact of this action in process the provide misleading information, make the unverified claim and sometimes plainly lie about the product or process, तो ऊपर ये आर्टिकल दिया गया। In the fast acknowledgement of greenwashing, UN Secretary General Antonio Guterres on Tuesday warned the private corporation to digest from the such practice and demand their way within the year. There will be zero tolerance for the greenwashing
and he is the नो गोइंग क्लाइमेट मीट सर अल शेख। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल देंगे कि व्हाट इज द ग्रीन वॉशिंग और इससे क्या साइडली वाइड स्पेयर है और क्रेडिट और ऑफशोट क्या होती है, कि जो क्लाइमेट चेंज के नाम से चीजें किए जाते हैं और क्लाइमेट को ज्यादा खतरे में डाल दिया जाता है। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल देंगे। केस अगेंस्ट संजय भंडारी आर्म्स डीलर विथ एलेज्ड बाद्रा लिंक्स। जो लंदन कोर्ट ने मंडे में अप्रूव किया कि इंडिया रिक्वेस्ट टू एक्सट्राडिशन ऑफ आर्म डीलर संजय भंडारी को फर्स्ट ट्रायल ऑफ द टैक्स एविजन एंड मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया। द केस गोes now to UK Home Secretary Sulya Burbeman for the his ascent. Development is politically significant since the case against the Bhandari have linked to rebut बाद्रा सनी लॉ ऑफ सोनिया गांधी। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया कि संजय भंडारी के जो केस है लंदन के ऊपर, वो आप इंडिया को टैक्स इविजन और मनी लॉन्ड्रिंग में, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल देंगे। आप इसे सेल्फ नॉलेज से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जो वर्ल्ड अफेयर की है। बाइडेन एजेंडा हैंग इन द बैलेंस इन मिडटर्म इलेक्शन, डेमोक्रेटिक वर्सेस जीओपी, यूएस वोटर डिसाइड बैलेंस ऑफ पावर इन कांग्रेस। जो 35 सेनेट और 435 सेनेट हाउस सीट में बैलेट हो रही थी अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल देंगे। अमेरिका ऑन ट्यूसडे कास्ट द फाइनल बैलेट इज क्लोजली फॉट इलेक्शन दैट विल बी डिटरमाइन द वेदर डेमोक्रेटिक लूज कंट्रोल ऑफ कांग्रेस विथ इट एबिलिटी टू पुश फॉरवर्ड द प्रेसिडेंट बाइडेन एजेंडा इन द नेक्स्ट 2 years। तो उसके ऊपर पूरा आर्टिकल देंगे। आप इसे सेल्फ नॉलेज से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। जीरो टॉलरेंस फॉर द ग्रीन वॉशिंग, यूएन चीफ वांट्स फ्री। तो फर्स्ट टाइम ऑफिशियली एक्नॉलेज में किए गए अनफेयर जो प्रैक्टिस होते हैं वाइडली बीइंग यूज्ड टू क्लेम प्रोग्रेस ऑन क्लाइमेट एक्शन। यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने ट्यूसडे में वार्न किया कंपनीज के और अदर स्टेट एंटिटीज की परसिंग द नेट जीरो गोल्स नॉट द इंक्लूड ग्रीन वॉशिंग एंड अपग्रेड देयर द प्रोसेस विद इन द ईयर टू शो द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ देयर एक्शन। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए। नेक्स्ट आर्टिकल्स पे जेलेंस्की ओपन टू टॉक विथ रशिया ऑन यूक्रेन टर्म्स। जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की सजेस्ट करेंगे ओपन पीस टॉक विथ रशिया, सॉफ्टिंग हिज अर्लियर रिफ्यूजल टू नेगोशिएट विद मॉस्को व्हिल द ब्राजीलियन पुतिन विन पावर व्हिल द स्टिकिंग कीप डिमांड। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए। जर्नलिस्ट अरशद शरीफ वाज मर्डर्ड इन केनिया से पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर। जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है राना सुहाला ऑन ट्यूसडे कहा कि इंटरनल प्रोब में शो किया गया कि जर्नलिस्ट अरशद शरीफ मर्डर इन केनिया इट वाज द नॉट केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिफाई क्लेम बाय द लोकल पुलिस। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। और विंजिंग ने कैंसिल किया यूए की लीडर वीडियो एड्रेस एट द ओपनिंग ऑफ ट्रेड एक्सपो। चाइनीज अथॉरिटी ने बिहाइंड द मेजर ट्रेड एक्सपो इन शंघाई पुल्ड की है ओपनिंग सेरेमनी एड्रेस बाय यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट दैट वाज to criticize Russia-Ukraine war and call to reduce US trade dependency on China, diplomat said. ये pre-record video थी। Charles Michaels have meant to be one of the several from the world leader and head of the international organization, including Chinese President Xi Jinping, opening the China International Import-Export Friday. 3 European diplomats एडलिंग दैट द वाज सरप्राइज दैट स्पीच वाज बीन रिमूव। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे जो इकोनॉमिक की है। इंडिया टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी स्टॉक मार्केट बाय 2030। जो जीडीपी लाइक है क्रॉस द 7.5 ट्रिलियन बाय 2031। यूएस के जो बैंकिंग ग्रुप है मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि इंडिया सेट करेगा बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड स्टॉक बाय द एंड ऑफ द दिस डेकेड विद द जीडीपी ऑफ लाइकली टू 7.5 ट्रिलियन 2031, मोर देन डबल द करंट लेवल। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए। सेबी आरबीआई येट टू रीच पैक्ट विथ यूए ऑन एक्शन अगेंस्ट द क्लियरिंग बॉडीज। जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बॉडी है सेबी इज फाइनली एडवांस्ड स्टेज ऑफ नेगोशिएशन विथ यूरोपियन सिक्योरिटी मार्केट अथॉरिटी ISMA टू आयरन आउट द डिफरेंस ऑफ द सुपरविजन ऑफ Indian Clearing Corporation, which was recognized by the European Union Financial Regulatory Market last week। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए। The said Reserve Bank of India, also one of the regulator for clearing body, is the reach to the match agreement with ISMA, which is sought to be expect the 6 Indian clearing operation or central counterparties
On October 31, ISMA said it will be withdraw the recognition of 6 Indian central counterparties, clearing the Corporation of India, the Clearing Corporation Ltd and NSE Clearing Ltd, Multi Commodity Exchange Clearing and India International Clearing Corporation and NFC IFS Clearing Corporation under the European Market Infrastructure Regulation regime। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिए गए। नेक्स्ट आर्टिकल्स पे 13 प्राइवेट एजेंसी क्रेडिटेड फॉर द मिनरल एक्सप्लोरेशन। जो गवर्नमेंट ने ट्यूसडे में कहा है कि 13 प्राइवेट एजेंसी है जो क्रेडिट कर रहे हैं फॉर द कैरिंग द एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल इन कंट्री विद द टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी एंगेज इन मिनरल एक्सप्लोरेशन कम्स 22, माइनिंग मिनिस्ट्री सेड इन स्टेटमेंट। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए। KKR set to invest $400 million in April Agrawal's Secrantica। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया। यूएस के जो प्राइवेट इक्विटी मेजर है KKR said Tuesday to sign agreement invest $400 million about 3,262 crore decarbonization plan from Secretariat Renewable, a group of company Anil Agrawal which is plan to provide the clean energy solution। तो उसके ऊपर आर्टिकल देखिए। Roland split into 5 bids to push profit। जो फ्रेंच कार मेकर रोलैंड है वो अनाउंस किया है कि मेजर ओवरहॉल दैट द हिस विल बी स्प्रेड एक्टिविटी इन द 5 बिजनेस डिपेंड टाइज विद द चाइना गैली एंड स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनटू थ्रू द स्टॉक मार्केट लिस्टिंग नेक्स्ट ईयर। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया। IOC HPCL BPCL क्वार्टर लॉस एट द 2,749 करोड़। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिए गए। India to benefit from the price cap on Russia oil, Elena। India will benefit from the proposed price cap on Tuesday, Secretary of Janet Elena said, and agreeing the United States does not want to Russia profit unduly from the war by enjoying price that unnecessarily very high due to the Ukraine invasion। तो उसके ऊपर आर्टिकल दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जो स्पोर्ट की। तो आज के द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिस्ट पे इतनी। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।